So hi everyone, myself Forgajit today, and in this video we are going to look at a data analysis project. You can say a very small project that will help you to understand how visualization works. See, visualization is very important for our data analysis because it will help you to see the patterns. We are not good at numbers. Humans are not good at numbers, observing the underlying patterns and stuff like that. So we have we have to visualize the data using graphs, right? Okay, so we have to visualize the data using graphs. So for that thing, what we are going to do is here I have imported the necessary modules. Import pandas spd. Import keyword is used to import any modules into your working project. So here I have used a Python notebook. See here, you can see that it has a, here you can see, right? Follow my cursor, that here you can see it has a .ipynb extension. So what that means is ipynb means interactive Python notebook. I for interactive, py for Python, nb for notebook. Perfect. So import pandas as pd. Why we are writing as pd? Here you can write anything else. कुछ भी लिख सकते हो तुम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा धर्म, कुछ भी लिख सकते हो, बट वी राइट पीडी एज अ कन्वेंशन. और ये पीडी ना लिखो तो भी चल जाएगा, बट वेयर इन द नेक्स्ट बॉक्स, इसे बॉक्स ही कहते हैं ना, नेक्स्ट सेल, सेल कहते हैं, एट कोड सेल या सेल. So in the next cell, I have to, if I have not used import pandas spd वाला अगर मैं नहीं यूज करता तो मुझे यहाँ pandas लिखना पड़ता, and it is a time consuming method. बार बार pandas लिखो, pnds, so it is a time. So we have made it short. जैसे कि हमारा एक अच्छा नाम होता है और एक निकनेम होता है, घर में सभी निकनेम कह के पुकारते हैं ना. That's like we have given a nickname to pandas, and that is PD. PD as a convention because it improves readability. और कोई जब पढ़ेगा तुम्हारा कोड तो PD देख के उसे पता चल जाएगा कि ये pandas मॉड्यूल के बारे में बात किया जा रहा है अभी, ठीक है. So PD dot read CSV. Read CSV is a method that is used to read the data. और वो df is a variable. df stands for data frame. और ये like ये डॉट CSV फाइल को कंट्री वाइज लेटेस्ट जो ये है डॉट CSV फाइल, इसको लेके इधर डेटा फ्रेम में ला देगा. डेटा फ्रेम इज अ वेरिएबल है. pd dot read CSV because read CSV method is used because we are reading a CSV file. See here I have double quotes means string, right? डबल कोट्स में मैंने वो पाथ दे दिया. I have given the path from which yeah, I have given the path from which the dot CSV, like everything, every data that we are going to work on is present. And why I have written a R here? It represents a raw string. मैं एक और भी, I could have done another thing. I could have used a path variable. अगर मैं ये कर देता तो भी चल जाता. It would have worked, but it is giving me a syntax warning. Invalid escape sequence. We have used escape sequence, that is a backslash.
because in Windows the path name will contain backslash. So that's why. But the thing, it has already loaded, because here if I run the df, you can see the loaded data frame, but it is giving me a warning. That's why I have used r here. R means raw string. Here it will not check it has escape sequence or stuff like that. It will take the whole group of letters that are within the double quotes and take it as a raw string. So if I run it now, it will not give me a syntax error, but the result will be same. That's why we use R, that is a raw string. That's why I have used it here. Okay. So df, what is the data frame all about? The data frame is all about COVID-19 data. I have taken the data from Geeks for Geeks. It is publicly available. You can go to their blogs and you can check that. So वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, right? And see the data. It has country or region. There are different countries. Confirmed. Confirmed means the number of confirmed cases in that country. COVID-19 cases. तो positive cases होता था ना वो वाला. The number of deaths that occurred in that country. Number of people recovered. Active cases. ये एक्टिव, अभी जो एक्टिव है, अभी जो मतलब अभी जो लोग पॉजिटिव है कितने लोग हैं, दिस थिंग. न्यू केसेस, this new deaths, this new recovered, this deaths by 100 cases. So you can say it as a death percentage. कितने लोग 100 में से कितने लोग मर रहे हैं इस कोविड से, 3.5. डेथ्स पर 100 केसेस, रिकवर्ड पर 100 केसेस मीन्स कितने लोग रिकवरी कर रहे हैं इन दिस कंट्री. व्हाट इज दैट कंट्री? अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में कितने लोग रिकवरी कर रहे हैं, that is 69.49, and deaths per 100 recovered. This is a good measure. Deaths per 100 recovered. Okay, ये क्या है, ये deaths per 100 recovered, नहीं पता, ये तो नहीं पता, ये I won't able to interpret it. If you can, just write it down in the comments. Confirmed last week. How many cases has been confirmed in the last week? 1 week change. कितना चेंज हुआ लास्ट वीक में, एक हफ्ते में. 1 week चेंज, 1 week% increase in a single week. How many cases have been increased? See, if the last week the cases have been, last week the cases have been 100, and now the cases have been increased to 110. So that is a 10% increase. And who region, 10% हुआ ना, 100 minus 110 also ना, yeah, 10%. who region, that is a ईस्ट मेडिटेरियन, मतलब किस हु का रीजन में ये कंट्री बिलोंग करता है, ईस्टर्न मेडिटेरियन. नेक्स्ट अल्बानिया इस किस हु रीजन में, यूरोप. सो लाइक दिस वाइज वी हैव लोडेड द कंप्लीट डेटा फ्रेम, राइट. रन कर लेता हूँ इसको. div.head is a function to give you the first 5. By default it gives the first 5 rows of your data frame. See, it will give all the columns, it will, but it will give the first 5 rows. See, indexing is from 0 to, so 0 1 2 3 4 45. It is very handy, it is very useful to actually look at your data at a quick snap. But quick look करने के लिए ये बहुत ही काम का है div.head. Next is df. Value counts. What does it do? Return a series containing counts of unique values. जो unique value है उनका count कितना है. See, if I have a series
सीरीज किसे कहते हैं? सीरीज कहते हैं only if it has only a single column. If I have see, it is a series because I have in the data frame I have chosen only the who region, so it becomes a series. और जब बहुत सारा रहेगा तो उससे कहते हैं, I forgot that name. सीरीज कहते हैं और एक चीज कहते हैं सीरीज एंड हम देख लेंगे हम उस दिन, अभी देख लेते हैं पांडास. या एक है सीरीज. सीरीज मतलब only one column. It's like an array, single array. And data frame is like two-dimensional label data. मतलब rows and columns. It will have rows and columns. एक only एक कलम नहीं रहेगा उसमें. उसमें सीरीज में टू डायमेंशनल डेटा रहेगा, राइट. जैसे कि एक मैट्रिक्स, जैसे कि डेटा फ्रेम हम देख रहे थे ना अभी. या दिस df डॉट हेड जो रिटर्न कर रहा है ये एक डेटा फ्रेम है. इधर तुम्हें मिल भी जाएगा शायद. या सी arrowhead and it returns a data frame. Arrowhead data frame means it what it returns. And in semicolon int equals to 5 means by default it will take a 5. डिफॉल्ट ये 5 लेगा अगर तुम कुछ ना दो उसे. if you don't pass anything. And df of who region, see df square braces sorry square brackets and who region means I will get only the that that series of East Mediterranean, Europe, Africa, this thing. Dot value counts means value counts will count the unique values. Suppose I have a column and in that column मैं लिख ही लेता हूँ इसमें एक sorry I need the MD means markdown. Markdown series A B C D. See, suppose this is a series. Series contains A, B, C, C, D. And now, if I run valueCons function on this series, what it will return to me? It will return that valueCons के बाद क्या आएगा? Return A occurs twice. कि यूनिक क्या है? A, B, C, D यूनिक है. A, B, C, D. These are uniques. And A, how many A's are present? 1, 2. It will count the value. See, value count function. इतना आसान है ना. B is 1. C is, sorry, what am I doing, man? C is 3 and D is 1. So the value count function is written this. See, here you can see what the value count function. Europe, 56 countries belongs to Europe, Africa 48, America like this. Name count data type in. Now what is important is, now we are jumping onto graphs. First, I think we will check. Okay, pie chart. We'll start from pie chart. It is still running. Yeah, I need to check it is still running or not. Otherwise, it will be. See, वेलोकॉन्स फंक्शन क्या करता है हमें पता चल गया. Okay. The series
We have also understood what is a series and what is a data frame in pandas. Next is region counts. Uh, data value. See, value counts also returns a series, and we will store the this thing that who region Europe has 56. Uh, how many countries belongs to a single who region? We will store this data onto the region counts variable. Okay, and that this variable contains series. ये हमें पता चलता है कि if you hover your mouse cursor in if you're using an intelligent IDE like VS Code, or there are many in the market. Most of you can will get open source, or you can take subscription also. For some there is a subscription based model. You will get to see that this is a series. Okay, df who region that value counts. ये जो value counts हमने count किया कितने में क्या है, we are storing it. See, for your here हम कर लेता हूँ यहाँ पर. For your understanding, what I have done is I have also printed the type of region counts. What type region counts is? Region counts is a series. See, pandas.code.series.series. Region counts dot info info it gives you a pretty good information about the data. See, prints a concise summary of a series. This method prints information about a series including index, data type, null values and memory usage. null values and memory usage. Memory usage तो यहाँ पे कहाँ पे मिला मुझे पता नहीं. Data type is int 64. Emilia. Name count. Okay. Next is expand the cell. Okay. So next is region counts dot plot. Dot plot matlab we are now want to plot this series. Region counts is series dot plot. We are going to want to plot. What will be the kind? Kind. See, these are args, right? KW args. You can see कितना कितना तरह का प्लॉट हम कर सकते हैं. लाइन, बार, बार एज मीन्स बार हॉरिजॉन्टल, हिस्टोग्राम बॉक्स, केडीई, क्लस्टर डेंसिटी, केडीई आई डोंट नो केडीई, हाँ केडीई का फुल फॉर्म शायद अभी डेंसिटी, एरिया, पाई चार्ट, स्कैटर, एक्स बीन, all these things. I've chosen pie chart. See, what is this? Auto PCD. It means, see here I have written 5.3%, 29.2%. If I remove this now, you can see the magic what will happen. If I remove this and now I run this, see these things didn't came. किसमें कितना परसेंटेज है वो नहीं आएगा अगर. So Z, okay. So auto PCD like used to write which part contains what percentage. These are simple. If you used to plot 2-3 graphs, you will get used to it. Fixed size. Fixed size is 8 by 8. I have given it 8 by 8. You can give it anything. You can give it, see, if I give it 10 by 8, and fixed size is पहला शायद height होता है, दूसरा है पहला width. First thing is width, I guess. I believe that the width will increase now. Yeah, the width got increased, right? 10 में 100 कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा. नहीं हुआ कुछ. Fixed size 1, if I do it 1,
नो, शायद एक का करो तो दूसरे भी समझे। सी फिक्स है strangle 90. Okay, now plot the title. टाइटल देना जरूरी है ना। प्लॉट डॉट टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज बाय हु रीजन। प्लॉट डॉट वाई लेवल। वाई लेवल अगर मैं इसे हटा दूं तो वाई लेवल आ जाएगा कुछ ना कुछ। सी काउंट, दिस काउंट is this is why like 5648 this count comes here. It is not good, it is not looking good, so I am going to remove it. How am I going to remove it? I am going to write that plot level, show this plot level, and I will give blank. Blank means nothing will be printed. Now plot dot show क्यों जरूरी है? Why? Plot dot show is important to remove this thing, text 0.5 0.5 all those like फालतू चीज ये अगर ना आए तो सिर्फ प्लॉट को शो करो। दैट्स व्हाई प्लॉट डॉट शो। ओके, डिस्प्लेस ऑल ओपन फिगर्स। ओपन फिगर को डिस्प्ले कर दो जो जो ओपन है। गिव डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू लाइन। लाइन प्लॉट अगर किया मैंने और अगर सिर्फ for the whole data frame I am running this, so see 1 is 6 means 10 to the power 6 and here 0 to 25 the numbers. See this line shows for confirmed date, all those things. Here you cannot you can't grasp anything, you can't understand anything from this thing. फिर से मैंने df dot hit किया। Why I have done it here? Because I want to see that I forgot that what other columns और क्या क्या column name है and for the names what I used to do is see I am not that kind of hard working guy who will write here COUNTRY। और ये लिखते लिखते अगर कुछ गलत स्पेलिंग हो गया ना तो ये नहीं काम करेगा। सो दैट्स व्हाई just run a df dot hits or df dot calls df dot columns function and just copy it। इधर से कॉपी कर लो, ctrl C, इधर आके पेस्ट कर दो ctrl V। That's it, that's how easy it is। see origin dot value cards फिर से हमने ये यूज किया और प्रिंट के अंदर किया ताकि ये प्रिंट हो जाए। वेस्ट बंगाल, every country, every is a unique country, so every country has count 1, and for who region we have already seen this, why it looks like this thing। See now you will understand the benefit of plot dot show। plot dot show मैंने नहीं किया इसमें, and I will run after printing all those things access x level origin y level confirmed। I don't need this thing, ये फालतू की चीज है ना। I don't need this line, so what I will do is I will just write plot dot show open all show all the open figures and see this lines गायब हो गया ये, right? So now we are going to see a scattered plot। x is equals to origin। स्कैटर प्लॉट के x एक्सिस में क्या हुआ, origin, y में confirmed मतलब कितना केसेस confirmed हो गया। s is equals to 100। s शायद याद नहीं आ रहा है, s शायद कुछ तो था। इस मतलब अच्छा अच्छा इस मतलब डॉट साइज आई बिलीव इससे मैं एक कर दूं अगर, हाँ या इस इज द डॉट साइज। सी 1000 कर दूं तो सी या इस इज द डॉट साइज, सो लेट्स कीप इट 100 here। Fixed size 20 by 20। I want it to see it as a good, as a big graph, so it is 20 by 20। Perfect। माइक पकड़ते पकड़ते हाथ दुख जाएगा मेरा। I need to buy a stand for this, I guess। This is the confirmed cases। See the
the y-axis is confirmed. Here we have already given the y as confirmed, and the x-axis is who region. So as a kind scatter plot, see, it's pretty simple. एक ही तरीके से हर ग्राफ बनाना है हमें. And again I have done deep dotted, but here is a trick. I have passed 20. 20 means it will give me the first 20 rows. It will give me the first 20 rows from 0 to 19. See, 0 to 19. Give me the first 20 rows because head में कुछ data limit हो जाता है ना बहुत कुछ. For the first 5 rows, maybe the data is biased, or maybe the data contains does not contains all the information that I need to see. So then okay. Then I have done head div dot head of 20, fast 20. Getting all the info that's important. Now I want to look all the info that is important. Div dot info. Info में क्या क्या आता है हमें दिख गया था. Info के बाद शायद एक वो करना पड़ेगा हमें. ऐसा करना पड़ेगा या info में. See, you can see that info में क्या क्या आता है. हाँ, इसमें चले जाओ तुम. div dot info बता देता है कि ये डेटा फ्रेम है. div क्या है? डेटा फ्रेम. Ranged index 187 entries. 187 entries are there. What are the indexes? 0 to 186. Data columns. How many columns are there? Total 15 columns are there. And not null count. 187 not null is there. See, the data that we have taken are very polished, very, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी डेटा उठा लिया. अगर तुम डेटा स्क्रैपिंग करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नॉट नल वैल्यू कितना है, नल वैल्यू कितना है, ये सब यू नीड टू सी. कंट्री, our region is an object because it is of string type. It is names. Everything is other than int or float, and the last object is who region, right? And how much memory it using, and how much memory is it using? It is using just 22 KB data frame. जो पूरा हमने data frame input किया है, that is using just 22 KB. So div.info gives you so much of information. This information. Div.shape gives you like see now if I talk about this, that data div.info we have seen. See, this mirror prints information about a data frame including the index data type. Index data type means, see, index का जो ये data type है ना, वो क्या क्या है, वो not null values and memory usage. Index data types and columns. पूरा का data type data frame और रेंज इंडेक्स 187 एंट्रीज, सबका जो डेटा टाइप है, कितना नॉट नल वैल्यूज है, all those stuff, and 22.0 KB memory usage. And next is div.shape. What does div.shape is? div.shape के बाद शायद columns नहीं देना पड़ेगा, वो brackets नहीं देना पड़ेगा. div.shape. div.shape. Okay, great. So चलो, yeah. So what does it say? Okay, div.shape. You can't give this type of brackets in div.shape. ऐसे ही रखना पड़ेगा. See, किसी को भी सब कुछ नहीं पता, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, बट किसी को भी सब कुछ नहीं पता रहेगा. एक्सपेरिमेंट करके करके गूगल में देख के ऐसा ये सब करके सीखना पड़ेगा, राइट? और मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो ऐसे ही सीखता हूँ. टपल रिटर्न्स आर टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम एक है, उसका शेप अगर तुम चाहो तो वो एक टपल देगा कि in this example 187, 187 means it has 187 columns, and 15 means it has 187 means it has 187 rows and 15 columns. This thing it represents this thing. See, here is an example. pd.data frame और डिक्शनरी के मदद से
यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया गया है, सैम्पल डेटा फ्रेम कॉलम 1 1 2 column 1 1 2 column 2 3 4 how see how it looks column 1 column 2 1 2 3 4 in a single row 1 3 is present in the next row 2 4 is present like this. And if I say df dot shape, how many rows are there? Two rows. How many columns are there? Two columns. In the next thing we have given three columns, so in that df dot shape we got 2 comma 3. 2 comma 3 means two rows, sorry, two rows, two columns and three rows. नहीं, तीन column है ना. So let me see. I don't want to confuse you guys. Column 1 1 2 3 4 5 6. So row कितना हुआ? तीन ना. column 1 column 2 2,2 तो पता चल गया. div dot shape, ये भी पता चल गया. ये मैं करके देख लेता हूँ एक बार. लेट मी जस्ट, अच्छा ये, हाँ ये तो हो जाएगा ना. लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग डाउन वंस. मैं करके देख लेता हूँ. सी, हाँ ये मैंने किया. ये तोड़ाना पड़ेगा. ये ऊपर वाला भी. हाँ, डिलीट डिलीट डिलीट. परफेक्ट. नाउ इट शुड वर्क. अच्छा, वेरिएबल नेम df1 कर देता हूँ मैं. वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी given df as a variable name and shape 2,3. But next if I print df1, yeah, see how this data is going to look. column 1 1 2 column 2. So df dot shape में क्या क्या आया? How many rows are there? There are two rows and there are three columns. So df dot shape में क्या आना चाहिए? 2,3. Two rows and three columns. और एग्जाम्पल में क्या आ रहा था? 2,3. So 2 rows and 3 columns. Perfect. Done. This is an example, right? ये क्या उड़ा दूँ? हाँ. Let me just remove this thing. df dot head. It just give you the first 5 rows and tails give you the last 5 rows. और अगर हम कुछ पैरामीटर पास कर दें, इंटीजर पैरामीटर like 20, it will give you that number of rows. If you here it will give you 21st rows, and in the tail here it will give you 10 last rows. df dot, see, I will see you, I will make you understand these things. df dot head कहाँ से आया? या ये सब हो गया. या see df dot head for the first 20 0 to 19, right? इधर इतना कलम accommodate नहीं होता. So what, how they are showing backslash, एंड जो नेक्स्ट सेट ऑफ कलम्स है वो यहाँ आ गया. न्यू डेट्स, न्यू रिकवर्ड डेट्स पर 100, रिकवर्ड पर 100, लाइक दिस. यहाँ से आ गया डेट्स 100 रिकवर्ड, कंफर्म्ड लास्ट वीक, 1 वीक चेंज. इधर और तीन वो आ गया, कलम्स आ गया, और इधर और दो. तो ये खत्म हो गया. फॉर द नेक्स्ट थिंग इज df dot tail of 10. See, this gives you 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 rows from the last, from the end. That is why head and tail. See कितना आसान है. हेड मतलब पहला, टेल मतलब आखिर से. और like the same wise we have इतना 15 columns cannot be represented in a single go. So backslash is used as a representation that बाद में हम करेंगे. And df dot calls, वो जो है ना, वो रिटर्न करता है कितना कितना कलम्स है. सी df dot calls प्रॉपर्टी कलम इंडेक्स. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, क्या क्या कलम्स है वो रिप्रेजेंट करेगा. अच्छा, इसका भी तो शायद वो नहीं होगा ना. ब्रैकेट मत देना इस इन सब में. इंडेक्स, सी व्हाट आर द कलम्स? कंट्री, रीजन, कंफर्म, डेट्स, these are the columns, right? These are the column names. Here you can see, if you ever want to try to get some column names, write some column names, पहले देख लेना कि वो column है कि नहीं,
क्या डेटा टाइप है, वैसा कुछ। नेक्स्ट नेक्स्ट किसका आउटपुट है ये देखना पड़ेगा। डीएफ, अच्छा डीएफ का पूरा टोटल डीएफ मैंने प्रिंट करके देख लिया। C024 डॉट 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 182 to 186 ट्रंकेशन दिस इज कॉल्ड। मतलब अ, जो अंदर का जो पार्ट है ना वो सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, इतना बड़ा डेटा फ्रेम है, तो कुछ सैंपल पहले से लास्ट से लेके दिखा दिया तुम्हें। Starting with EDA. EDA means exploratory data analysis and visualization using AI, using artificial intelligence. uh, मैंने AI यूज किया था तो इसलिए मैंने लिख दिया यूजिंग AI थोड़ा बहुत, बिकॉज मेथड उतना याद नहीं रहता और stuff like that. So I have see meaningful variable name is very much important in coding, and that's why I've given df sorted dates. This is a variable and df dot sort values मैंने sort कर लिया by by which sort किस तरीके से किया by alone the what dates, dates मतलब number of dates, or ascending false, ascending is equals to false means ascending arrange नहीं होगा ये descending arrange होगा, like the most number of the countries that will have the most number of deaths will be at the top, then the second, then the third. Likewise, if I have not given anything, ascending would have taken true, and this will give me the like least death countries. Now it will give me the least death countries, but now it will give me the like now I am taking the top 20 deaths. Top 20 deaths means the top 20 countries that have the most number of deaths, and give sorted dates from this data frame. From this data frame I have taken the data frame and I've taken specified column from this. See how to take अगर एक series होता ना, अगर only one you want to take, you would have taken like this, ऐसे कर सकते। बार प्लग तो छोड़ दो, ये तो हो गया ना डेथ्स, ये इतना सारा, but it is still a data frame. It is still a data frame. See, this is showing it is a data frame because square brackets के अंदर भी square brackets हैं, और ये bracket हटा दूँ ना मैं, now it is going to become a series. So क्या मतलब इसका, या सब कुछ पहले जैसा कर दिया मैंने. So मतलब if I will remove, if I want to take a series from a data frame, single square bracket, your job will be done. But if you want to take a data frame from a data frame with some specific columns, just write a square bracket and then put another square bracket. In that, give all the column names that you want to include in your new data frame. Dot head means पहले का 20. Print top 20 dates. Top 20 dates I'm going to print. Next, plot dot figure. Plot dot figure is a method which will बहुत कुछ कर सकता है ये मेथड, बट इन दिस क्या बोलो, इसमें हम we will setting the figure size 9,6. See figure size, you can see I guess here figure size, yeah, width, पहले वाला 9 जो है वो width है, width मतलब this thing, and next is height, height will be 6. Bar plot, we are going to use bar plot. Bar plot, as you already know how it looks. Okay, okay. Bar plot. See, there are bars, right? So this is called bar plot. Bar plot. SNS dot bar plot. Here we are using Seaborn, क्योंकि Seaborn थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, बहुत कुछ वो कर सकते हो तुम, ह्यू चेंज कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. बार प्लॉट में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, तो ट्राई टू यूज बार प्लॉट whenever you are using a plots. Why? What will be the why?
Y means country or regions, as you have already seen. X means number of dates. Data is equals to top 20 days that we have already made here. Palette, palette मतलब कलर, कलर पैलेट क्या होगा? रेड, ये वाला होगा ना, रेड्स बैकस्लैश डी। ये गूगल से या एआई से तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा सुंदर लग रहा है या वैसा कुछ। ना भी तो भी चल जाएगा शायद। हाँ चल तो जाएगा, लेकिन सी कलर पैलेट अभी ये था, ये आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट। और मैं अगर ये कर दूं ना रेड, इफ आई that, it will come, see how beautiful it looks now। पहले वाला भी सुंदर ही था, लेकिन ये स्मॉल चेंज एंड ट्विक्स। सी कंट्री और रीजन के अलग अलग हिसाब से अलग अलग कलर होगा। ह्यू ह्यू चेंज किया ना हमने। सी स्वीडन इज दिस कलर, पाकिस्तान इज दिस कलर, इंडिया दिस कलर, लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड ह्यू। ह्यू मतलब একটা कंट्री के अलग अलग, अगर कुछ अलग दो पैरामीटर तो अलग काम करेगा ये। और अगर ये चेंज कर दो और ह्यू भी तुम ये कर दो तो सब कुछ बार प्लॉट एक ही कलर में आ जाएगा। हाँ देखो, ह्यू अगर हमने नहीं दिया तो सब कुछ एक ही कलर में आ गया, राइट। सो ह्यू इज इम्पोर्टेंट टू सी विच डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट, ये सब करने में ह्यू अलग। स्कैटर प्लॉट में ह्यू ह्यू यूज होता है। लेजेंड, लेजेंड का तो मतलब पता नहीं। लेजेंड, I will see in into this. Yeah, okay, you still live on this one. See, here we can do one thing. Before using AI, we can try one thing. First, understood by it by ourselves. पहले हम देख लेते हैं कैसे ये, क्या ये है। ये हम कमेंट आउट करते हैं, ये हम रन करते हैं, और लेजेंड से कुछ आया, कुछ चेंज आया, मुझे तो नहीं लग रहा है। बट ओके, अगर सर्जन आए तो देखते हैं हम ऐसे। लेजेंड, maybe I am pronouncing it wrong. Legend of crafts, no? I need to search. अच्छा अच्छा, legend मतलब कुछ small samples of the color, legend. Pronunciation is legend. Lekin I still can't get it. What is it? Key that identifies various data series characters. Symbol, blue line, produces product A sales. Okay, okay. Small box, typical vision. Oh, ये वाला है, ये वाला है। Legend is equals to false. Legend, this is the thing. ये वाला, ये वाला, ये वाला। Yeah, this thing. ये जो
ये ब्लू लाइन कंफर्म के लिए, ये लाइन डेट्स के लिए, ये जो बॉक्स है ना इसको कहते हैं। अगर मैं ये फॉल्स करता हूँ equals to false, तो सी दिस गॉट रिमूव्ड, या आई अंडरस्टूड दिस थिंग। सो इसको कहते हैं लेजेंड। और अच्छा ये कुछ समझ में नहीं आएगा अगर इफ आई वुड हैव यूज्ड दिस, तो आई रिमूव दिस। परफेक्ट, डन। नेक्स्ट थिंग इज div dot head, ये हमने कर लिया। We have studied all those things, sort values, bar plot, yeah, bar plot. Title, now we are giving it a title देना बहुत, it is very much important because when now you remember everything, which graph is used for what purpose, but when, after 1 year or after 6 months, or when you are going to show the data analysis to the client or to the companies, it is very much important you use titles for better understandability. X level, Y level दे दिया हमने। font size you can set it from here, font size 16, 12, 12, plot the title layout means टाइटल लेआउट क्यों यूज किया मैंने, ताकि इधर उधर कुछ मतलब वैसा ना हो जाए। आ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये अच्छे से यूज करके। ओवरलैपिंग कंटेंट अगर ना हो जाए तो इसलिए टाइटल डॉट शो राइट। सी visualization, see here you can see what thing does what. Countries on the y-axis, total dates on the x-axis, user top 10 data are read, adjust plots to prevent label ओवरलैपिंग ना हो जाए इसलिए। ये यूएस, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम एक साथ मतलब ओवरलैप ना हो जाए, दिखने में कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए दैट्स व्हाई यूज्ड टाइट, क्या वो टाइट लेआउट, राइट। The same thing we have done here in a better way, in a beautiful way। इसमें हमने सी हॉरिजॉन्टल बार यूज किया हमने, राइट। बार प्लॉट यूज किया इसमें। See the same thing, एनालिसिस टॉप 10 कंट्रीज बाई टोटल डेट्स, पहले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, फिर वो पर्टिकुलर कलम ले लिया, टॉप 10 ले लिया, देन प्रिंटेड द टॉप 10 डॉट सेट इंडेक्स। अच्छा प्लॉट डेटा, हियर वी आर यूजिंग द like only pandas and we are not using SNS to plot. Dot plot kind of bar each horizontal bar graph, darken legend false, plot size font size equals to 12। ये मैंने कर दिया सब, ओके। y set country as the index, div dot plot panda trees the index as the x-axis। अच्छा why why we have done this thing, ये वाला हमने क्यों किया, सेट इंडेक्स, कंट्री रीजन को इंडेक्स की तरह क्यों सेट कर लिया, because by default pandas will use the integer index, like instead of country name 012 यूज कर लेता पांडा। countries name on y-axis, date counts on x-axis, bar lines, beneficial set in the index and even is SNS reverse the order reverse कर दिया ताकि बड़े से छोटा वैसा करके आए। डिलीट डेटा फ्रेम, डिलीट मतलब you can delete the data frame that is no longer is going to used later for better memory management, but रह लेने दो 22 KB 100 KB, क्या ही होगा अगर बड़े डेटा में काम कर रहे हो तो डिलीट कर लिया करो फॉर बेटर मैनेजमेंट। टॉप 10 कंट्रीज ये कंट्री रीजन बार प्लॉट। सी यूएस, अच्छा हमने तो स्टडी ही नहीं किया वो बार प्लॉट से हमें क्या, यूएस हैव द मैक्सिमम डेथ्स, ब्राजील इतना, ब्राजील में कितना है, ये कुछ 80,000 ही है ना, ये 80,000 से 1 लाख शायद, 92 वैसा कुछ।
92 वैसा कुछ है ना, ये मैं देख लेता हूँ ब्राज़ील में जाके। सर्च किया जा सकता है ये। ब्राज़ील, हाँ, ब्राज़ील में डेट सी 87, 87 ना, 87। और हमने क्या देखा यहाँ से कि ब्राज़ील का सी, इधर 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 इधर, हाँ 87 वैसा कुछ आएगा ना, like this you can see graph, you can easily see it on the graph, right? So sorted dates, फिर से मैंने क्या ये क्या ये अच्छा, for using only pandas and matplot.lib, matplot.lib उससे करने के लिए नेक्स्ट इज टॉप 20 डेट्स। अच्छा अच्छा, why we use two brackets? See, I've already explained you this. Double brackets means multiple, you are selecting multiple columns from a data frame. Single bracket means it is going to be a series, right? Perfect. Two brackets means it's going to have a data frame. Data frame means 2D, series means 1D. That is where quick demo. Okay. Plot data is equals to top 20 dates dot sort values. It's top 20 dates में sort कर लिया. H lines, H lines मतलब क्या plot किया है? What we have got here? अच्छा, here we have tried to done the lollipop plot, I guess. Color salmon, alpha, line width, x max, x mean, country. Plot data of country with y. This gives you a series. Plot dot plot country. O is for larger marker dot. ये जो डॉट आ रहा है ना इसमें डंडे के ऊपर वो, for that thing we have used O, and color is darkened. Title lollipop plot, font size this, title layout. Okay, perfect. See, this is the lollipop plot. Top 20 countries with total death, lollipop plot. um Total deaths, Belgium। अच्छा, टोटल डेथ्स और डेथ्स अलग है शायद ना, हाँ डेथ्स और नहीं नहीं एक ही है, लेकिन चलो ठीक है, प्लॉट्स में। ओके ओके, राइट, परफेक्ट। So now I want to know the who regions on the basis of the dates by confirms ratio. I think I have to use group them by sum and then find the ratio. I should, okay. कितने लोगों को पॉजिटिव केस आया? How many people got COVID positive and how many out of them died? On that ratio, dates by confirmed ratio, I want to know what are the who region, like who regions कैसे होगा, कितने में, what who regions is like what, मतलब what who region, which who regions have the maximum dates by confirmed ratio, which is the lowest, or by doing so I can get a better understanding of the data. How I'm going to do is group by who region. See what I have done, df regional. I don't want to work on the whole data frame. I have chosen the particular column that I just need. So I need confirmed columns, dates columns, and who region. I've taken those and printed to look that if I have taken the right columns and stuff like that. करते करते प्रिंट भी कर लेना कभी कभी, ताकि देख लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। df डॉट ग्रुप बाई हु रीजन में ग्रुप कर लो। ग्रुप बाई मीन्स ग्रुप बाई का एक बहुत अच्छा, आई कैन गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ग्रुप बाई। dot sum dot reset index. Okay, okay, so I guess for today it is enough. Up till what we have done is enough. अच्छा, लास्ट ये कर लेते हैं ना, लास्ट up till this thing I think we should do up till overall dates by region. From the next thing we are going to हाँ, from the next thing we are going to
नेक्स्ट जो है वो हम बाद में कभी कर लेंगे. ओके, परफेक्ट. Who region? Okay. So group by in pandas. I am going to explain group by in pandas very beautifully. So let's pause the video. Okay, okay, it's recording now. Let's start doing the stuff that we are continuing. Group by. I am going to explain you group by, right? इधर ले लेते हैं कोड. Mark down code. Okay. Does. के देखा नहीं खूबसूरत कोई जैसे चंदा क्या. अच्छा, ओके, परफेक्ट. अच्छा, ग्रुप बाय मतलब we are going to group it, right? See, we have made a data. The first column is category A, B, A, C, B, A. I know it's a little hard to comprehend, but डिक्शनरी की तरह लिखा हुआ है तो देख लो. Category, these are the categories, these are the values 10, 15, 20, stuff like that. So grouped, df dot group by category. So what it does, it ग्रुप कर देगा वो. ए का एक ग्रुप बना देगा, बी का एक ग्रुप, सी का एक. See, all the uniques. This creates a group by object. Actual operations happen when a method is called. Category sum. It returns a group by object. इससे कुछ नहीं होगा. But there is a see. There will be only one A. There will be only one B. There will be only one C. So which value? A का पहला लूँ या A का 10 लूँ, A का 20 लूँ या A का 35 लूँ, B का 30 लूँ या B का 15 लूँ. There is a confusion. For that thing, we are going to give it a aggregate function. And how to give that aggregate function? df dot group by of category square braces value on which column the aggregate function is going to operate, the value function dot sum. So what output we will get? A65, sum of all the values of A, B65, like that. You can give dot mean dot max, वैसा कुछ कुछ होता है. There are things like that. See, अच्छा, you can use it as subcategory also. How to use it as subcategory? A B A C B A, X Y X Z Y Y. So for A, there are how many subcategories? X Y. There are two subcategories. For B, there are only one subcategories. For C, there is only one subcategories, that is Z. These are their values. And here we have used the aggregate function means. Group by category and subcategory. And next, we have taken the value dot mean, applying multiple aggregate function using dot agg. Acha, you can apply multiple aggregate function using dot agg. Sum, mean, count, stuff like that. A count matlab how many are there, how many A's are there, how many B's are there. So we have got what is group by. इतना कुछ समझा दिया तो समझ में आ ही गया होगा. Dot group by who region dot sum. Reset index means after giving the group by sums, the previous indexes will be present. Here could have been 34, here could have been 56. हमने वो सब हटा दिया. We have got rid of that. We have reset those indexes. So printf, then df regional death rate percentage, df regional deaths by df regional confirmed into 100. Previously, acha, df regional death rate percentage. Here we are going to introduce a new column, and the column name is death rate percentage, right?
सो रीजनल न्यू कलम, डेथ रेट परसेंटेज, और वैसे हम क्या लेते थे, ऐसा करके सीरीज, एंड वी आर मेकिंग अ सीरीज df regional of deaths by confirmed into 100, and then we are going to print the ये head, head मतलब ऐसा कुछ. See, these are the percentages. Next is if regional sorted. We are going to sort it by death rate percentage. See, the maximum will come at the top and the minimum will go at the bottom. After sorting, we are printing टू स्ट्रिंग करके प्रिंट करने में सब कुछ स्ट्रिंग में बदल जाता है और देखने में थोड़ा सुंदर लगता है. That's the reason we are going to. If you are printing in notebook, it doesn't make too much of difference, right? So next we are going to plot dot figure size. We are setting the figure size as 12.5, that is width comma height, and bar plot. We are taking a semester bar plot. We are making a bar plot. The x-axis will count the whole region and the y-axis will count the death rate percentage. And what will be the data? The data we have already made is DF regional sorted. Palette will be Vidits. I don't know how to pronounce that, but this thing I have chosen as palette. AI suggested me to do this. That is. Next is the title, the X level, the Y level, the X ticks. See, what is these things to plot at X ticks? Rotation 30%. HE is equals to right. Horizontal axis, yeah, right. So horizontal axis से 30% रोटेटेड हो गया ये. अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से राइट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर लिफ्ट कर दूं ना, लिफ्ट, यू कैन सी, नहीं ये तो सेम ही आया. सो दिस थिंग हैज सम डिफरेंट मीनिंग. I'm going to explain you this. Wait a little bit. एक दिन से भुला दूंगा. Tick marks and labels on the x-axis. So tick labels with the see horizontal axis से horizontal alignment is equals to right. मतलब horizontal, horizontal, this is vertical, this is horizontal, horizontal alignment is right. So थोड़ा इधर हो गया ना, राइट में हो गया. रन करूं तो horizontal alignment लेफ्ट, सी राइट में आ गया ये यूरोप, इसका राइट में आ गया. horizontal alignment अगर लेफ्ट कर दूं मैं, सी इट कम्स दिस साइड, लेफ्ट में आ गया horizontal alignment, द राइटिंग का. So right is looking good. Rotation 30%. Rotation 30% means this is the, if this is the angle, we're rotating it 30% for better visibility, you can say. See what we have got. What we have got. We have got this thing. Uh, we have got death rate percentage. Europe has the maximum. That is, I don't know, 6 point. I guess I have written here. Yeah, 6.399. 6.399 death rate Europe. See, here you can see. America's around 4, West Pacific around 3. See, and another thing, there are only 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are only 6 WHO regions, right? So we have plotted everything. Next is group by WHO region, uh, confirmed text. Okay. Now another thing. Now we are uh, making a sum of
2 columns confirmed and deaths group by who region से group कर रहे हैं और and resetting index that is diff regional। और अच्छा अच्छा ये तो कर ही लिया था पहले, ये सब तो कर ही लिया था। ओके why we are doing this thing, see here it is difficult to understand that ये कितना है 6.9 है या 6.6 है या 6.3 है। For that thing, in this thing we have written it on the top, there is 6.4, there is 3.9, there is 2.8 for better understanding। So how to do that, इसके लिए एक लूप चलाना पड़ेगा for p in x patches, x dot patches ये I have got the plot the axis as ax dot वो जो बार प्लॉट का पूरा वेरिएबल में सेव कर लिया। देन p in exact patches, हर एक पैच के लिए हम लूप करेंगे। हाइट वी आर गेटिंग द हाइट, we are taking the label got one if only one decimal places after the decimal, only one integer after the decimal। So for that reason we have done this x dot annotate। annotate मतलब क्या लिखूं उधर क्या डिस्प्ले हो। text is equals to label, the label that we have calculated, position center comma x ये position calculate कर लिया। horizontal alignment is center and vertical alignment is bottom। वर्टिकल अलाइनमेंट इज बॉटम, अच्छा इसका बॉटम अगर टॉप कर दो ना ये सी that doesn't look nice, so bottom xy text offset points font size 10 and we have got this beautiful okay okay we have done up till this, up till this we've done up till this, and next day we will be continuing the next parts, okay, and that's it for today, thank you, bye bye, take care.